Hello, good morning, everyone. This is Ehsan Chishti. I am the Senior Project Coordinator of AMP, Association of Muslim Professionals. A very warm welcome to all the participants. So, we have the college, which is Bansal Institute of Engineering and Technology, and the topic for today would be mindset transformation. We have our speaker for today, Mr. Salman Zia, and we have the faculty member as well from Bansal Institute of Technology, Engineering and Technology, Mr. Abdul Jabbar. So I would start the session first by a short prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. So I would now run a short PPT, a short presentation, which is about AMP, Association of Muslim Professionals. Introducing Association of Muslim Professionals, AMP. Association of Muslim Professionals, or AMP, is a non-profit organization, and among many other activities, we endeavor to promote employment and knowledge in our society. These are few of our flagship projects: AMP job fairs, skill development lectures, which we conduct in schools, employability training programs, which we conduct in colleges, and right now, due to the pandemic, we are doing it online. So all our activities right now we're doing online, job fairs as well as job drives. Employment assistance cell, which is the core project of AMP. We keeping in mind AMP's core objective of supporting the underprivileged, promoting education and creating economic empowerment. These are few of our major activities: job fairs, job drives, employability training programs in colleges, skill training company tie-ups. So, job fair is one of the flagship projects of AMP, and we have successfully organized 42 job fairs till date. Every job fair has participation of minimum 50 companies and 2,000 plus candidates. AMP has organized job fairs in the past in collaboration with Thane Police, Aurangabad Police, West Bengal Minority Finance Development Corporation, Andhra Pradesh Minority Finance Corporation, and other reputed NGOs. AMP invites corporates like TCS, Asian Paints, Reliance Group, Cafe Coffee Day, McDonald's, Team Lease, Tech Mahindra, and other reputed corporates. These are a few snapshots of our past job fairs. So job drives are similar to job fairs but are on a smaller scale. We typically invite up to 2 to 3 corporates who have specific openings. We conduct job drives in the rural areas where there are less opportunities for the students and candidates. These are a few of our snapshots of our past job drives. Employability training programs. So AMP's Employability Training Program, or ATP, has been developed to assist job seekers find the right job at the right place at the right time. Our ETP trainers are seasoned professionals who have in-depth understanding of employability training and are committed to investing their valuable time, resources, and knowledge in grooming the candidates. These are a few of our snapshots of our past interventions, employability training programs. We also tie up with companies, skill training companies. So AMP has partnered with reputed skill training companies like Tata Trust, Whirlpool, Tech Mahindra Foundation. This is a small snapshot of our past intervention into skill training program with Whirlpool. So our past achievements: we have done 42 plus job fairs, 9 online job fairs, 270 plus job drives, 4 online job drives, 200 plus employability training programs, 14 online employability training programs. AMP has recently launched indiazakat.com and theindiamentors.com. Indiazakat.com is India's first
Zakat crowdfunding platform floated by the Association of Muslim Professionals with a view to bring the Zakat seekers and Zakat givers on a unified platform. Its objective is to undertake its operations purely with the intent of bringing socio-economic transformation in the lives of the people without seeking to generate any commercial surplus. The IndiaMentors.com strives for the development of a vibrant and progressive student community in India. To achieve this, AMP tries to reach out to every needy student of India through the medium of education, career guidance, and employment assistance. The IndiaMentors.com envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. I would now introduce our speaker for today, Mr. Salman Zia. He is an experienced instructor having 16 years of work experience and loves working with students and professionals and likes to motivate them. He is competent in creating a learning environment that is interactive, relaxed, and enjoyable. He has a strong acumen in training and teaching, passionately involved in content development and classroom training pertaining to spoken English, communication skills, personality development, motivational talks. He takes regular sessions on soft skills, campus interview preparation, communication skills. He's taken training sessions in SRIT, Jabalpur, mental health and stress management. He's taken training sessions for junior and middle level executives at Uninor Telecommunications, UP East and UP West, IOGI Technical Support, Gurgaon and LIC India, pertaining to business etiquette, business communication, client relations, process, product and sales, as well as soft skills. He has worked with many corporates and institutions as a freelance trainer on multi-dimensional training assignment through Hero MindMind and Indus, teaching communication and soft skills to professionals and students. I would now request our speaker for today, Mr. Salman Zia, to please start the session. Salman sir? Yeah, a very good morning to all of you, all the organizers. As you can see that it could be like a dark side from my end. So I'm just going to turn off my camera because recently I just experienced a power cut out here. So because of that power cut, I have turned off my camera. Moment I have the light available, I'll turn on the camera once again. So this is the session, the topic which as we have discussed, that is that mindset transformation. So let me just give you a very small meaning about it. What is mindset and what is transformation? Friends, when I say mindset is what that in our life every now and then we are going to encounter certain things. So when we are going to encounter certain things, we are going to create those images, we are going to create take the data in our mind, and we perceive that there are certain things which we can do and there are certain things which we cannot do, right? So every possible incident, every possible thing we are trying to do it, we are going to experience something and we are going to get it in our mind. That is the mindset. Sometimes our mindset is being set on the basis of one experience. For example, one student was preparing for a campus placement activity. He appeared for a campus. Because of nervousness or hesitation, he could not perform as per the expectations, right? His own expectations, and that is how he is going to have a mindset that I cannot perform. So here, this is the mindset. A mindset, it can be considered as a wrong belief, right? So here I'll be using a small terminology called NLP, that is neuro linguistic programming. What is neuro linguistic programming? Neuro is for words of neurons. Neurons means the whenever we thought something, whenever we do something, there are brain waves, alpha, beta, gamma, and different thing altogether. These all are neurons, right? Then we have got linguistic. Linguistic means the language of neurons, the language of neurons. And the third point, that is programming, right? How to program that, the language of neurons, how to program our mindset. So here I would like to cite a very small poem and a few lines of a very small poem, and these few lines are, it says, think big and your deeds shall grow. Please try and understand the meaning of this, because here we're talking about that mindset. Think big and your deeds shall grow. Think small and you will be left behind. Think you can and you will. It is all there in the state of mind. Life's battle always does not go to a faster or a stronger man.
Life's battle always does not go to a faster or a stronger man. Sooner or later, the one who wins is the one who thinks he can. Sooner or later, the one who wins is the one who thinks she can. So this is the very strong statement about the mindset. If you think you can, yes, you will. But if you have a doubt, there's a challenge. There's a problem, right? So there are a number of things which we think we can, which we think we cannot. So in the beginning of my session, I'm giving a small assignment. If you can have a pen and paper available with you, please, on the right hand side, please write the thing which you can. Give a title that I can. On the left hand side, please write I can't, and we will discuss it out little later. Once we are going to have a Q&A session, we will talk about that, why we did so. That I can and I can't things are there. So guys, again, ये तो बात की हमने mindset के बारे में. Mindset, right? Now the transformation, now how the transformation will take place. The very important word for transformation, that is about the awareness. Awareness of what? First of all, that is the self awareness and the awareness about the environment. For example, in this pandemic, we all are trying to adopt that new normal, right? We all are trying to adopt that new normal. What is that new normal? That means that we are trying to adopt it online culture. Every individual, right? Could be people, those who are into sales and marketing, they are trying to adopt new culture. People from academic industry, they are trying to adopt new culture. People from different domains, they are for example, we trainers, right? We love to go and train people in their own premises, but here we are trying to adopt that new normal, and we are trying to train people online, right, through this Zoom application, Google Meet, and different resources. So we are trying to adopt that new normal, and in order to adopt that new normal, there is one is terminology that is called cognitive flexibility. This means the ability and the capacity of your mind to adopt to change. कि आपके दिमाग की जो ability है और जो capacity है change को adopt करने के लिए, ये सारी की सारी process हमारा उस पर depend करता है. आपका mindset form होता है. Here talking about that the transformation, the mindset and the transformation happens, when I realize, for example, in our training industry, there's something called, we can talk about, that personal brand, your own brand management, right? If I give you a small question, that when people look at you, could be your family members, could be your relatives, could be your acquaintance, when they look at you, what they think about you, what is your brand image? आपकी brand image क्या है लोगों के सामने, आपकी family के सामने, आपके friends के सामने, आपके acquaintance के सामने? You need to be aware about it, because if you are not aware about your present brand image, how will you change it? That the change is about transformation, that I should be knowing that what exactly I'm into right now. I must be knowing what is my current status, and I have a desire to change it. So what is my current brand value is a very important thing. I should know, I must know, and now I want to change it. So how to change it? Now there will be a process of, like going towards it. लाइफ में बेटा, लाइफ में कुछ भी प्रोसेस का हिस्सा बने बिना हमको नहीं मिल सकता है. फॉर एवरीथिंग वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस वी नीड टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन, राइट? Ahsan bhai, I request you to please start the PPT. Yes, sure. So here the mind, thank you. Here the mindset transformation is very very important. We are trying to adopt new culture, we are trying to adopt new technology. Every possible time we have got new devices. It is like what, that whenever we go to a Play Store and we find that, there are certain apps which need to be updated, because when we update those applications, automatically we are going to enjoy new features, and in order to enjoy new features we need to update it. So my question to all my trainees are, when was the last time you update yourself? When was the last time you update yourself? आपने आखिरी बार अपने आप को update कब किया था? Right? It is a very important question. When was the last time you add few new words in your vocabulary? When was the last time you talked about something invention? There has to be a very important question, and that important question is not that, when the new vaccine is going to be there, how this pandemic situation will go over. There are certain things which are not in your hand. What is in your hand? That what can I do that to happen? So in that case, we need to ready to adopt to change. We have to ready to adopt to change. Otherwise, we will not be able to compete with them. Talking about these challenges, talking about these conditions, that we have to be ready to adopt the challenges. So these 10 skills are very very important to understand, right? So cognitive flexibility is going to play a very vital role in that case. You are being flexible, being adaptable is going to be very 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 important.
it was very difficult for all the academician, जिन्होंने कभी भी लाइफ में कैमरा फेस नहीं किया था, जब उन्होंने अपने वीडियो बना करके लेक्चर लेना स्टार्ट किए, या जब उन्होंने कैमरा के सामने बैठ के ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट करी, इट वाज अ न्यू नॉर्मल सिचुएशन, बट दे वर कंपेल्ड टू अडॉप्ट इट। या तो आपको अपनी आप हेजिटेशन, आपका स्टेज फियर आप देख लीजिए, या फिर जो आपकी अर्निंग के रिसोर्सेज है उनके उसके हिसाब से काम कर लीजिए। तो देयर वाज अ बिग चैलेंज, एंड यस, everybody would love to change. Now, the top 10 capability that make 2020 a success are what? The first thing is that complex problem solution. The complex problem solving, complex problem solution. What are complex problems, right? This is a complex problem pandemic situation. So there has to be a right question. Understand one thing, that we all are talking about, we all are raising question that vaccine kab aayegi, halat kab badlenge, ye kab hoga, wo kab hoga. We are having number of questions. Dear student, this is absolutely stupid questions. They are, these things are not in your hand. वैक्सीन कब आएगी, ट्रायल कब होगा, हम कब वैक्सीन मिलेगी हमको, ये हमारे सवाल नहीं है। हमारे सवाल तो ये होने चाहिए कि what can I do in that situation? How can I secure a job? How can I do this? How can I do that? Our question should be focus on that what I can do in place of what is happening around me. जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हमारे अराउंड में हो रहा है, वो तो होता ही रहेगा। मैं क्या करूं? What should I do in that case? How can I secure my job? What skills do I need to add? Do I need to add my personality? The complex problem solving is that, and for in order to solve a complex problem, we should know the right question. Now, critical thinking and creativity. Critical thinking is very very important. आज की in today's scenario, that AI is replacing human brains. So AI is replacing human brains. A very true statement. अब जहां के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं करती, वहां पे क्रिएटिविटी काम में आती है। हमारे पास जो डेटा हमने फीड कर दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एक रिसेंट एग्जांपल था कि जेट एयरवेज में एक कस्टमर ने जेट एयरवेज ने अपने ट्विटर हैंडल करने के लिए एक रोबोटिक प्रोग्राम लगाया था। वहां पे कस्टमर ने कंप्लेंट डाली। उस कंप्लेंट में उसने लिखा कि थैंक यू सो मच जेट एयरवेज फॉर फ्लाइंग मी टू बैंगलोर एंड माई लगेज टू हैदराबाद। Thank you so much, Jet Airways, for flying me to Bangalore and my luggage to Hyderabad. And that particular, like robotic program, what happened? It catch that one word, that the thank you. Took that. This is an appreciation email, and the responded to. Well, we are happy to hear that you have a wonderful time with us. Do fly with us again. So that was a complaint. That was not the appreciation, right? It was a sarcastic complaint. It has been written in the form of sarcasm. But the robot doesn't understand what exactly it is, can't understand the emotion and feeling. So there we come, right? Otherwise AI is able to replace our brain, machines are automated, everything is happening in that way. Human resource management is there, coordination with others is very very important, emotional intelligence is very very important. What I mean by emotional intelligence, guys, here you need to understand what exactly it is. Emotional intelligence is all about accepting yourself the way you are, in terms of your personal look, in terms of your appearance, your height, your health, your complexion, your family background, your financial status. Everything you have to accept yourself. If you are not able to accept yourself, it would be difficult for you to move on in your life, because every possible time you will crib and criticize your condition. And the one who always crib and criticize, are very difficult chances for him to grow faster. जो अपने हालात पे रोता रहता है, जो अपने हालात पे क्वेश्चन मार्क लगाता रहता है, जो भगवान से बोलता रहता है मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जहां के ऊपर बहुत स्मॉल टाउन्स के, बहुत स्मॉल विलेजेस के लोगों ने अपनी लाइफ में खेती किसानी करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है, एंड दे आर देयर एन आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर. सो इफ यू क्रिटिसाइज ओवर योर प्रॉब्लम, if you always crib and complains, I am sorry, that will not going to happen. That is not going to fetch you any benefit. Judgment and decision making, it plays an important role in our life. Decision making is very very crucial, very very important. But the problem is what, that we do not take our own decisions. We look for other people to come forward and solve my problem, right? We narrate a story, we tell the problem and ask somebody else to come and decide for myself. I'll give you a very small example. What is happening. There are few students, those who approach me saying that, okay, sir, even I am from mechanical, I am from civil, I am from MBA and different thing altogether. And sir, I know, the job which I'm having right now is about Daru education and Byju's and Vedantu and different thing altogether. But my degree is in, that I have a degree in mechanical, I have a degree in civil, I have a degree in IT and CS. I said, beta, don't talk about the degree. Maybe there could be a possibility that कि 4 साल पहले आपने एक influence decision लिया हो,
right? You chose that CS branch, IT branch, or could be anything, kind of different course altogether. Could be influenced one. The right thing is what, that today you need to find out that अगर आपने कोई भी interview crack किया है, non IT company में interview crack किया है, it means that you have got the skill. There are many students, those who want to be a part of Byju's and Zaro and different companies altogether, but they are not able to crack it. They are not able to make it. Why? Because they don't have those skills. It means that you have the skills with you. So my advice is to play with your strength. And in order to play with your strength, the very first thing is what, that you must know what are your strengths. जब तक आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता नहीं होगा, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल नहीं पाएंगे, अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. तो डोंट बी दैट रिजिड कि मैंने मैकेनिकल किया है, मैंने सिविल किया है, तो मैं मैकेनिकल में ही जाऊंगा, मैं सिविल में ही जाऊंगा, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट दैट पैशनेट अबाउट इट, राइट? डिग्री को जस्टिफाई करने के लिए हम करियर चूज नहीं करते, राइट? फॉर एग्जाम्पल माई जॉब, राइट? माई जॉब इज टू ट्रेन पीपल. माई जॉब इज टू ट्रेन पीपल, right? So that is my job, and I love to interact with people. I love to interact with my students. That is why I not only earn money, at the same time I enjoy my work as well. That is my strength. So I chose my profession on the basis of my strength, right? Then judgment and decision making. Service orientation is very, very important. Egoistic people cannot be survive in this competitive world. People are having with ego, people having with rigid mentality, I'm sorry, they have a very difficult time. It is better to transform your personality. अगर आपको लगता है कि आप egoistic हैं, आप rigid हैं, अपने thoughts को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के, please open to change. Use your cognitive flexibility. Negotiation skills are very, very important, right? And then the 10th point is, I said, that cognitive flexibility. So these are the points which are very, very important. Now if you talk about the comparison के 2015 or 20 में क्या क्या changes आए थे, the certain skills have been replaced, right? For example, it quickly becomes clear the focus shifts. Creativity is now ranked 10 in place of 3, right? Key skills, and completely new to the list where emotional intelligence and cognitive flexibility. So emotional intelligence and cognitive flexibility are completely new. Creativity की rank change हुई है. That is how things are getting changed. तो ये जो हम जब ट्रेंड को अंडरस्टैंड करते हैं ना, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने जो माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैंने आपको बोली है शुरुआत में, अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, जब तक आप अपने आप को खुद को लेकर के अवेयर नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट को लेकर अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द चेंजेस इन द सोसाइटी, इन द एनवायरनमेंट, एंड दैट टू द वर्किंग कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. You need to find out your own fitment. And if you think that on XYZ parameter you don't fit, please transform yourself and add certain skills which are very, very important to be a part of the organization. Don't be that rigid, and don't be that in be stubborn in that case कि नहीं यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तो automatically the problems are going to be very, very high, right? Now empathy is very, very important. Now अच्छा, एक बात और भी होती है कि हम जब बात करते हैं ट्रेनिंग की बात, हम जब बात कर रहे होते हैं लोगों के काम करने के स्टाइल को लेकर के, एक वर्ड है एम्पैथी. एम्पैथी इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब लीडरशिप स्टाइल की बात होती है ना, तो जब वी हैव गॉट जैकमा, वी हैव गॉट जेफ बेजोस, वी हैव गॉट डिफरेंट डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर, बट दीज डेज एक इंसान की लीडरशिप को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा होती है. दैट इज दी सीईओ ऑफ स्पेस एक्स एंड, मैं नाम भूल रहा हूँ ब्रांड का, उनकी स्पेस एक्स एंड या टेस्ला, मिस्टर एलन मस्क. एलॉन मस्क की जो लीडरशिप स्टाइल, दैट इज अबाउट द फुल ऑफ एम्पैथी. Empathy is his like way of leading people. Empathy. So what is empathy? Empathy is what, that understanding the pain of others, right? Put your legs in the shoes of that character, find out what he or she is going through, and then respond accordingly. That is empathy. So there are certain things which we need to understand, which we have to adopt in order to survive in this new era. Yeah, bhai, please next slide. Okay. uh, Talking about the automation and industry 4.0 will soon be reality. Artificial intelligence robots, ये तो मैं बता ही रहा हूँ मैं आपको, these are going to be there, right? There are industries which are getting changed. If I give you the example of the transformation, how that happened. There were a number of brands were available some time back. Sometime back there were HMT. Sometimes there were like Dynora TV and big box TVs were there. We used to have a mobile phone like Nokia, five 5110, different brand altogether. But what happens, slowly and gradually things start getting changed.
ये जो पूरा जो प्रोसेस आया था बदलाव का, अभी हम आज की तारीख में बात करते हैं, वी आर इन द एरा ऑफ लाइक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? एग्जाम्पल देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास जो लार्जेस्ट जो चेन ऑफ होटल चेन है वो आता है एयरबीएनबी, और जो लार्जेस्ट कैब चेन है, कैब ओनर है हमारे पास वो आता है उबर। So Uber is the largest, like having the largest brand when it comes to the like, taxi and cab, and Airbnb is the largest hotel chain. And you can think that Ola, yeah, these Uber, they don't have any their personal cars. Airbnb, they do not have their personal hotels. What they are doing, they are having a one mobile application. Like in India, we have got Make My Trip and Trivago. What they are doing, they are trying to connect with the customer to the owner. हम खाली ब्रिज को फिल कर रहे हैं, ये एक नया बदलाव आया है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, फूड पांडा, Zomato and Swiggy, what they are doing exactly, they are only just mobile application. They are just the mobile application. They don't have any, they don't own any restaurant, they don't have anything with them, right? They have nothing with them. This is what, the change in the business. SpaceX ने अपनी जो नई कारें निकाली हैं अपनी, जो कि आपके लाइक ई एनर्जी पे के बेस्ड है, जो कि आपका गैस पे काम करने वाली है। ब्रिटेन में तो देयर आर फ्यू कंट्रीज जहां पे डीजल और पेट्रोल की कार पे बैन लगा दिया गया है। अब सोचिए उनकी जो इकोनॉमी, जो गल्फ कंट्रीज थी जो पेट्रोल और सप्लाई करते थे या जो क्रूड ऑयल सप्लाई करते थे, उनके लिए कितना बड़ा लॉस है। तो एक टाइम वो आने वाला है जहां पे जितने भी सेट बिजनेसेस हैं आज की तारीख में 10 साल बाद दे विल बी आउटडेटेड। जैसे आज से 20 साल पहले जितने भी बिजनेसेस थे वो आज की तारीख में आउटडेटेड हो चुके हैं। पीसीओ नहीं मिलते हमको, मोबाइल रिचार्जेस नहीं मिलते हमको, वो सारी की सारी शॉप क्लोज हो गई हैं, एंड दे आर कंपेल्ड टू चेंज टू मोबाइल एसेसरीज और डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। दिस इज अबाउट द चेंज। ये हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रोसेस में है, जहां के ऊपर हालात लगातार बदलने वाले हैं। एंड इन बदलते हुए हालात के साथ में आपको अपने माइंडसेट को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एज पर द नीड ऑफ टुडे, एज पर द नीड ऑफ करंट सिचुएशन एंड सिनेरियो, right? Right, can we have the next slide please? Right. uh right, can we have the next ppt, which I shared with you? Okay. फाइन। सो गाइस, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इसमें जितनी भी चीजें चेंज होती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, एवरी पॉसिबल टाइम थिंग्स आर गेटिंग चेंज, राइट? एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, मैं जब तक कि पीपीटी प्ले कर रहे हैं। वेरी स्मॉल स्टोरी ऑफ अ वेरी फेमस like magician, and his name was Harry Houdini. Harry Houdini was very famous magician, of his own time. And one fine day he challenged, कि डाउन साउथ यूएसए में ऐसा कोई भी जेल नहीं है, ऐसा कोई भी प्रिजन नहीं है जहां से मैं 1 घंटे में एस्केप ना कर सकूं। हैरी हुडिनी बहुत बड़ा नाम था, तो जितने भी जो जेलर्स थे उनको बहुत चैलेंजिंग लग रहा था कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। Then what happens? One jailer from a very small village accept the challenge. On that day, पूरा मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था जेल के बाहर। हैरी हुडिनी ने एक कंडीशन रखी थी कि आई विल गो टू द प्रिजन विद माय स्ट्रीट क्लोथ ऑन। स्ट्रीट क्लोथ मींस उनका जो मैजिशियन कॉस्ट्यूम है वो उसके अंदर ही जाएंगे। नो प्रॉब्लम, हैरी हुडिनी सेल के अंदर जाते हैं और जेलर है वो उनके पीछे से दरवाजे को, डोर को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में हैरी हुडिनी अपना कोट रिमूव करते हैं, अपना बेल्ट रिमूव करते हैं, और बेल्ट में से 10 इंच की बहुत फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथ की एक स्टील की रॉड निकालते हैं। और रॉड निकालने के बाद में वो की होल के साथ में अपना खेलने, अपना मैजिक वाला काम शुरू करते हैं, ताकि वो उसको गेट को अनलॉक कर सके। फर्स्ट 15 minutes he was very very confident about it, that he is going to do it, for sure. But what happened? He was not able to do it in first 15 minutes. तो जो चेहरे का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा चला जाता है। आधे घंटे के अंदर चेहरे पे परेशानी आना शुरू हो जाती है, और 1 घंटे के बाद में हैरी हुडिनी was collapsed behind the bar, and he was bathed in sweat, in short. After 2 hours, the event was completely over, and Harry Houdini was not able to open that particular like door of the prison. He was not able to. अब क्या हुआ एग्जैक्टली जब वो उन्होंने कोलैप्स कर दिया, उन्होंने गिव अप कर दिया, देन व्हाट हैपेंड? जेलर आते हैं, जो जो जेल का जो डोर होता है उसको होल्ड करते हैं और धीरे से उसको स्लाइड करते हैं, डोर खुल जाता है। हैरी हुडिनी वाज सरप्राइज्ड, ही वाज कंप्लीटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, क्योंकि जो जिस डोर को वो अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे वो डोर लॉक्ड ही नहीं था।
That door was not at all locked, and he was trying to unlock a door which was not locked, but it was locked. But it was locked where? In the mind of Harry Houdini. हैरी हुडिनी को लगा होगा कि जिसने भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया है उन्होंने जो वर्ल्ड का जो बेस्ट पॉसिबल जो लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं वो लॉक किया होगा. इवन he could not think for a second that कि शायद ये डोर लॉक्ड ही ना हो. ऐसे n number of things we are having with us जहां के ऊपर हमारे लिए दरवाजे लगता है बंद हैं. These doors are locked, but to be very honest with you friends, no door is locked. All doors are open. You only need to go and check it out. Whatever the keys which you are having in the form of skills, just try it out. You will be able to get it. This slide, as we have discussed, top 10 skills shared by World Economic Forum. But please move to the next slide now. Ahsan bhai, please put the next slide. So here I'm trying to make you understand that we need to change accordingly. We have to change accordingly, right? That is the transformation process. That first of all, I want you to be aware about it, and after being, Ahsan bhai, please change the screen. List down your questions in the Q&A section. Salman Zia sir will be addressing those questions answers by the end of the session. Salman sir, we had lost you, so you were saying something. Yeah, bhai, I was saying something. Even I was just requesting you to play the next slide of the PPT. Okay, okay, so I'll just do it once again. तो फ्रेंड्स ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, द स्टोरी अबाउट दैट हैरी हुडीनी, इसका मैसेज बहुत क्लियर था कि कभी कभी हमारे दिमाग में लॉक होते हैं. फॉर एग्जांपल गूगल ने Again, भाई you're getting disconnected. to be very honest with you, at my place, I'm just there at the near to my balcony, and I really don't think that there's a problem, right? To be very honest with you, but again, I have changed my location just now. I have just changed my location. Please. Right. Okay. So, so yes, I was simply talking about that the message which we can learn from this particular thing, that Harry Houdini only assumed that the door is locked because somebody has accepted the challenge, right? But that door was not at all locked. Friends, to be very honest with you, in our life we are having the same condition. We are going through in the same process, that we assume things more and we do less, right? हम चीजों को मान लेते हैं, चीजें ऐसी होंगी, चीजें वैसी होंगी, and after that we are not able to change our own things, right? So please don't lock your mind. Don't get stuck somewhere. Don't get stuck anywhere in your life. Please make sure that you are keep moving, and don't have those wrong beliefs. These are the wrong beliefs. To be very honest with you, wrong beliefs कौन से होते हैं? हमने लाइफ में किसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में तय कर लिया ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है. So friends, understand this, that until and unless we don't try for at least for 3 to 5 times, we cannot be so conclusive. We cannot jump to a conclusion, right? 3 से 4 बार करने के बाद में हम conclusion पे नहीं आ सकते. We cannot jump to a conclusion, to be very honest with you. At least you have to do this. Now here I am talking about the skills which are very very important. I'll just go through the list of the skills required for different job titles. Communication के अंदर क्या क्या आता है? And before I go to this, let me just give you a very small brief about one thing. गूगल ने एक सर्वे किया था कि पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट जो बड़ा फियर है वो फियर क्या है, द बिगेस्ट फियर इन द वर्ल्ड, एंड दे वर एबल टू फाइंड 2 on the top list. The first fear was stage fear, and the second fear was fear of death. The first fear, stage fear, second fear was fear of death. Now see that our priorities has been changed drastically, that कि हमारा पहला fear stage fear है, and the second fear is fear of death. Even ideally the fear of death must be at first place. Why it is on second place? So that is how our mind, that our priorities or thought has been shifted. Sometimes we are absolutely illogical, right? And our things are completely meaningless, to be very honest with you. So skills required for different job titles. Their communication की बात करते हैं. Communication, we have got verbal communication, we have got body language, writing skills, storytelling, listening skills, presentation skills, public speaking, and visual communication. Communication science, as per the communication science, it says that the communication has been divided into 3 major categories. The first, that is your non-verbal communication, your body language, that holds
55% of total communication. Correct? 55% of total communication. Second thing is that second thing is what that the paralinguistic features. When I talk about the paralinguistic features, it means that the way we communicate, our rate of speech, pronunciation, uh, articulation, voice modulation, MTI issue, that holds 38% of communication skills. So when you combine that 55 and 38, that becomes 93%. And the power of word is hardly 7%. तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो अहमियत है, ये सिर्फ और सिर्फ 7% की वैल्यू है. अदरवाइज ये अगर मेरे नॉन वर्बल साथ में नहीं आएगा, मेरी वॉइस के साथ में ये वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं आएगा, या मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको मैं चेंज कर दूं, राइट? फॉर एग्जांपल, इन प्लेस ऑफ सेइंग कम्युनिकेशन स्किल, ऐसे कम्युनिकेशन स्किल, राइट? मोमेंट आई चेंज माय प्रोनाउंसिएशन, यू वोंट लव टू लिसन टू मी. आप भागोगे, बोलोगे यार कितना बोरिंग स्पीकर है, मैं क्यों सुनूं इस चीज को. तो दीज आर द स्किल्स व्हिच वी हैव टू वर्क ऑन. देन लीडरशिप क्वालिटीज में क्या आता है? टीम बिल्डिंग, कोचिंग, मेंटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू मस्ट लुक फॉर अ मेंटर इन योर लाइफ. मेरी लाइफ बदलने वाला जो शख्स है, मेरी लाइफ को चेंज करने वाला जो इंसान है, उसमें मेरे मेंटर का बहुत बड़ा रोल है. And mentor is not could be your family member, could be your parents, could be your sibling, could be your anybody. Your mentor could be your teacher, could be your best buddy, anybody can be a mentor. But the mentor is one, जो आपको बताए कि आपके दिमाग में जो जंग लगा हुआ है ना, उसको क्लियर करके आपकी जो रियल टैलेंट है, जो रियल पोटेंशियल है, उससे आपको फेस टू फेस करवाए, दैट इज द मेंटर. तो मेरे लिए क्या लगता था मुझको, राइट, ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम, हैविंग अ लीन पर्सनालिटी, 5 feet 6 inches, 48 kg of weight, very lean. So one of my teacher, Mr. Lieutenant Colonel Dr. Chanchal Kumar Bhuttan, he used to say that, Salman, you are 10 times more potential, 10 times more potential. And I used to laugh at him, राइट? आई यूज टू लाफ एट हिम कि यार मेरे जैसा बंदा 5 फुट 6 इंच की हाइट, 48 kg वेट है उसका, मैं कैसे पोटेंशियल हूँ यार? हाउ कैन आई बी दैट पोटेंशियल? But moment I step into the field of training, then I realized that कि अब तक, dear friends, मैं about like कुछ भी नहीं तो I believe that कि 10,000 people को मैं train कर चुका हूँ मैं अब तक. That day I realized, what my mentor was trying to say. He was trying to push me to do something, when I can be the best. And that is the only field I can give my 100%, and I can be a game changer. मैंने अपनी लाइफ में बहुतों की लाइफ को बदलते हुए देखा है. ये जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, इनमें बहुतों की जिंदगी को चेंज होते हुए देखा है मैंने, राइट? तो मेंटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सुपरवाइजिंग योरसेल्फ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड मैनेजिंग योरसेल्फ. प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. पहले हमने दो हेड देखे, हमने कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया, और कौन सा आ गया? लीडरशिप स्किल्स आ गया. नेक्स्ट में आता है इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स. तो आपको चेक करना पड़ेगा वेदर यू हैव दिस और नॉट. Facilitation is very very important. How you can facilitate others, because that inspire people. You are selling. जब हम किसी शॉप पे जाते हैं सामान लेने के लिए, the way they convince, selling is influencing. Inspiring, how you can inspire other people. Persuasion, how you pursue things. Negotiation, motivating and collaborating. Interpersonal skills, very very important, and I give a extra push on where that intrapersonal skills. When I say intrapersonal skills, mean that how much you know about yourself. Interpersonal skills about your networking, interpersonal relationships, dealing with difficult people, conflict resolution, personal branding and office politics. मैंने इस पॉइंट को पिक किया था मैंने, पर्सनल ब्रांडिंग. What is personal branding? What is your current brand? When you go to your class faculty member, college faculty member, or could be the HOD, could be the dean of your institution, what do they think about you? How do they take you? राइट? हाउ डू दे टेक यू? तो वो क्या आपकी आपकी इमेज क्या, आपकी ब्रांडिंग क्या है? और ये कहावत कही गई, बहुत पुरानी कहावत है, बहुत सटी कहावत है, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी विच ही कीप. अगर एक बहुत ही ज्यादा एवरेज परफॉर्मर, अगर बहुत ही ज्यादा एवरेज परफॉर्मर जिसकी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत ही ज्यादा एवरेज है, अगर वो ऐसी टीम के साथ में उठना बैठना शुरू करे जिस टीम के लोग सारे के सारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हों, तो उसकी इमेज में भी वो चीज आएगी. जब लोग उसको देखेंगे तो वो उसको एवरेज में काउंट नहीं करेंगे. तो ये जो हमारा जो ब्रांडिंग होती है ना, किनके साथ उठना बैठना है, क्या कैसे करना है, इट्स कंप्लीटली प्लान्ड इमेज. So you can definitely change your brand, whatever your personal brand value right now. As if now, to be very honest with you, you can have a much better brand value, but subject to what, that you need to find out that what is your current brand value. Current brand value मिल जाएगी आपको अगर, तो आपको ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
Can we have next slide please? Now पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी. पर्सनल स्किल्स में फिर देखिए सबसे पहले पॉइंट आ रहा है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट, सेल्फ अवेयरनेस, राइट. इन दोनों के बिना हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि यार कि मैं 5 फुट 6 इंच का दुबला पतला इंसान हूँ, ये मेरी रियल अपीयरेंस है, मेरी चीजें हैं, बट क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? वॉट ऑल आई कैन डू, आई चेंज माई कंटेंट. I change my content. And guys, yes, you can definitely convert your weaknesses into your strength. आप आपकी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो. देयर आर मेनी एग्जांपल अवेलेबल. इफ यू गो ऑन नेट यू कैन फाइंड इट आउट. चलिए हम आपको नेट पे जाने की टाइम नहीं देंगे आपको, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ. मैं आपको राइट द रियल एग्जांपल. ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड एवरीबडी यूज्ड टू रन बिहाइंड मी. माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, माय एक्वेंटेंस, माय रिलेटिव. सलमान कम बोला कर बहुत बोलता है, सलमान कम बोला कर बहुत बोलता है. एवरीबडी वाज रनिंग बिहाइंड मी. बट फ्रेंड पिछले 16 साल से मुझे आज तक किसी ने भी नहीं कहा सलमान कम बोला कर, बहुत बोलता है. तो ये पिछले 16 सालों से मेरा बोलना ही मेरी कमाई. क्या बदल गया? मैंने बोलना कम नहीं किया, मेरा बोलना आज भी उतना ही जितना पहले था. बट द ओनली थिंग इज व्हाट दैट मेरा कंटेंट चेंज हो गया. पहले जो मैं बोलता था वो वेस्ट होता था, मेरी एनर्जी का लॉस होता था. अब जो मैं बोलता हूँ मैंने मेरा कंटेंट चेंज कर दिया. मैंने अपनी नॉलेज को, अपनी चीजों को अपलिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया. जैसे मेरा कंटेंट बदलना शुरू हो गया, मुझे उसी बोलने के पैसे मिलना स्टार्ट, right? So yes, your weakness, you can convert your weakness into your strength. Self awareness is very very important. स्ट्रेस मैनेजमेंट, कौन कौन सी बातें आपको स्ट्रेस देती हैं, अवॉइड करना शुरू कर दीजिए उन चीजों को. टेकिंग क्रिटिसिज्म पर्सनली. ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्रिटिसिज्म को पर्सनल लेकर के अपने अंदर चेंज लेकर के आते हैं, और फिक्स्ड माइंडसेट के लोग क्रिटिसिज्म को पर्सनल लेकर के सामने वाले से दुश्मनी पाल लेते हैं. Self confidence, adaptability, empathy, as I said, very very important, and friendliness. Now creativity में आते हैं. creativity के हेड में क्या क्या चीजें आएंगी? We have got problem solving skills, critical thinking, innovation, troubleshooting. troubleshooting, right? अभी हम नेटवर्क इश्यूज को देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो how we are going to solve it out. मैंने मेरी जगह चेंज करी बैठने के लिए, right? troubleshooting, how to solve that problem, how to shoot the trouble, right? तो ट्रबल शूटिंग के लिए अप्रोच क्या होगी हमारी? ट्रबल शूट करने के तरीके पे काम करें. अगर ट्रबल पे फोकस करेंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा. अगर प्रॉब्लम से दूर निकल के सोल्यूशन पे काम करेंगे तो यू विल गेट द थिंग्स डन. डिजाइन सेंस एंड आर्टिस्टिक सेंस, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पे आपको. हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा होता है. कोई सिंगर होता है, कोई डांसर होता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई कुछ करता है. सबके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा होता है. और हर इंसान अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चेंज करता है चीजों को, राइट, ताकि उसके लिए चीजों को सीखना आसान हो जाए. ठीक उसी तरीके से जब आप वर्किंग एरिया में जाते हैं और अपनी अप्रोच के हिसाब से जो काम के स्ट्रक्चर को आप डिजाइन करते हैं, अपनी आर्टिस्टिक अप्रोच ऐड करते हैं, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द थिंग्स डन. वहां पे आपकी जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो सामने आती है, इन प्लेस ऑफ कि आप लोगों को कॉपी करते हुए दिखाई पड़े, राइट. Ashambi, can we have the next slide, please? Now, प्रोफेशनल स्किल्स कौन कौन सी होती है बेटा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर. प्रोफेशनल स्किल्स में आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस एटिकेट, बिजनेस एथिक्स, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, डाइवर्सिटी अवेयरनेस, डिसेबिलिटी अवेयरनेस, कस्टमर सर्विस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, writing reports and proposal, business awareness, intercultural competence, right? These are the things which are very very important. ये आपकी professional skills का हिस्सा है. मतलब ये कि प्लानिंग में you have to be mastered, time management need to be absolutely perfect, business etiquettes क्या होते हैं, बिजनेस की एथिक्स, जो वैल्यूज की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज हमारे पास में, राइट. वी हैव गॉट सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, we have emotional values, we have different values altogether. टेक्नोलॉजी अवेयरनेस. अगर आज मैं जूम पे एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, राइट, अगर मुझको जूम एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या मुझे किसी फीचर को इस्तेमाल करना है, तो बिफोर आई यूज दैट जूम एप्लीकेशन आई हैव टू बी श्योर, आई मस्ट बी श्योर दैट हाउ कैन आई, व्हाट डिफरेंट टूल्स आर अवेलेबल एंड हाउ कैन यूज इट. सिर्फ कैमरा ऑन करके बैठ जाना, दैट इज नॉट द टेक्नोलॉजी अवेयरनेस. पूरा पता लगाना कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, और किस फीचर का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं. डाइवर्सिटी. You will not get people like you, similar minds, similar likings and disliking. No. Disability awareness, customer service, process improvement. किसी process का हिस्सा तो बन गए. Can I use my design sense, my artistic sense to improve the process? क्या मैं process को improve कर सकता हूँ? And we have the lot of practical examples available कि yes, process can be improved.
अगर प्रोसेस इंप्रूव नहीं होते तो एक ब्रिक साइज का मोबाइल फोन और ब्रीफ केस साइज की बैटरी आज छोटे से मोबाइल फोन में कन्वर्ट नहीं होते. तो एवरी पॉसिबल टाइम देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस. Writing reports and proposals, business awareness, and intercultural competence. Right. So, guys, I believe that this is the part from a PPT presentation, and here I would like to recite a very small story once again. ये स्टोरी का जो मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग समझ में आएगा आपको इसका. ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी आप लोगों ने कि ये जो बटरफ्लाई का स्ट्रगल होता है ना, तो एक बार टीचर ने क्या किया, बच्चों को बुलाया. एक बटरफ्लाई जो है वो कोकून से बाहर निकल के आने की बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत ट्राई कर रहा था, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था. बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद में बहुत थोड़ी सी बॉडी बाहर निकल के आ रही थी. एक बच्चे ने देखा उसको उसको उस बटरफ्लाई के ऊपर दया आ गई, बहुत तरस आया उसको उसके ऊपर. उसने क्या किया, वो गया उसके पास में, उस कोकून को उठाया, धीमे से बहुत डेलिकेटली वो जो शेल था कोकून का उसको हल्के से कट किया, टीयर किया. टीयर करने के बाद में क्या हुआ कि वो शेल कट गया और बटरफ्लाई बाहर निकल के आ गया. बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि बटरफ्लाई के बाहर निकल के आने के बाद में बटरफ्लाई की जो बोलते हैं ना कि उसकी जो स्ट्रगल करने के बाद जो उसके विंग्स में जो स्ट्रेंथ आती है, जो पावर आती है, जो ताकत आती है, वो नहीं आई उसके अंदर. तो उसकी जो विंग्स थे वो स्ट्रेंथ बहुत कमजोर रह गए, वो अच्छे से उड़ नहीं पा रही थी. राइट. और उसकी लाइफ का स्पैन था वो भी ऑलमोस्ट 3-4 दिन और कम हो गया था. तो जब हम किसी इंसान की लाइफ में जब हम स्ट्रगल की बात करते हैं, पर्सनल स्ट्रगल की बात करते हैं, हमारा पर्सनल स्ट्रगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको स्ट्रेंथ देता है. आई बिलीव कि शायद ये रिसर्च आप लोगों ने पढ़ी होगी. चेन्नई के स्टूडेंट की रिसर्च है कि चेन्नई के एक बच्चे ने, जिसकी ब्राइट स्टूडेंट था, लाइफ में कभी चैलेंजेस फेस नहीं किए थे, 10th को टॉप किया, 12th टॉप किया, आईआईटी निकाला, बीटेक के लिए आईटी से बीटेक किया, यूएस चला गया, जॉब लगी, फैमिली सेटल हो गई, सब कुछ हो गया, ऑल गुड. वापस इंडिया आया, शादी करी, फैमिली हो गई. ये 2008 का जो रिसेशन आया था, इसमें क्या हुआ, उसकी जॉब चली गई. ये लाइफ में उसने पहली बार फेलियर को एक्सपीरियंस किया, पहली बार उसने चैलेंज को एक्सपीरियंस किया, उसने वो चैलेंज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया. व्हाट ही डिड, उसने अपनी फैमिली में डिस्कस किया वाइफ के साथ में. यूएस में तो गन मिलना आसान काम है, बाजार में गया, गन लेके आया, अपनी डॉटर को शूट किया, अपने सन को शूट किया, अपनी वाइफ को शूट किया, बाद में अपने आप को शूट किया. और शूट करने के बाद में जब उसके स्पॉट से एक सुसाइड नोट मिला, उस सुसाइड नोट को जो फॉरेंसिक लैब में, जो रिसर्च साइंस में गया, उन्होंने पढ़ने के बाद में उनको ये लगा कि इस बच्चे ने पूरे सुसाइड नोट में खाली एक ही इंसान को रिस्पॉन्सिबल बताया है अपने इस कंडीशन के लिए, वो है उसके फादर या उसकी फैमिली. क्योंकि उसकी फैमिली बहुत प्रोटेक्टिव थी, उन्होंने कभी भी लाइफ में उसको चैलेंजेस को सामने करने का स्पेस दिया ही नहीं, उसने कभी लाइफ में चैलेंजेस को फेस ही नहीं किया. राइट. तो यहाँ से मेंटली वो बहुत कमजोर था, बहुत स्ट्रांग नहीं था मेंटली. राइट. दैट इज हाउ इट हैपेंस. तो जब हम लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, किसी के लिए हुए नहीं, टेक योर ओन डिसीजंस. छोटे छोटे फैसलों से स्टार्ट करिए, छोटे छोटे डिसीजन लेंगे लाइफ में आप अगर, तो बट नेचुरल सी बात है, आपके लॉसेस छोटे छोटे होंगे. लाइफ में बड़े चैलेंजेस लेने के पहले छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटे छोटे डिसीजन लेके देखिए कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब कहाँ पे है, कहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है. तो इस प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेंगे तो बेटा बहुत बेहतर रहेगा. और कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी मत चलिए. कंफर्ट जोन जो है मेरे हिसाब से वो किलिंग जोन है, जहां पे आप अपनी एबिलिटीज को, अपने पोटेंशियल को किल करते हैं. This is from my side. Fine, Irfan bhai, if we have like Q&A session, I would love to give the answer to the question, sir. So we have a few questions from the attendees today. Yes, जी भाई. From Mr. Abdul Jabbar, how जी. can we improve our public speaking skills? Public speaking skills, as I said, when it comes to communication skills, there, as I mentioned, that yeah, non-verbal communication is 55% and paralinguistics are 38%, and the power of word is 7%. Talking about your non-verbal communication, if you have a right gesture, if you have a right posture, straightened shoulders, right eye contact, confidence in your voice, and confidence in your face, so people will take you. When we look dicey, when we look confused, when we look, when we, people think that the speaker, that the trainer is himself not very sure about what exactly he's trying to say, or maybe he himself is not convinced with his own thought, own things. That is how the problem comes. जब आप खुद कॉन्फिडेंस साउंड नहीं करते, ना तो आपके नॉन वर्बल के थ्रू, ना ही आपके वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो आप बहुत ही ज्यादा एक फिक्स में दिखाई पड़ते हो. आपके जो लिसनर्स होते हैं उनको लगता है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, शुड आई लिसन टू हिम और शुड आई नॉट. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट योर नॉन वर्बल, योर फिजिकल प्रेजेंस नीड टू बी आउटस्टैंडिंग. Doesn't mean outstanding mean by that you have to be a very smart and dashing. Whatever your personality type is, your physical appearance is all about that, how you groom yourself.
right? Whether you have like trim your beard properly, your mustaches, proper haircut, neatly dressed up, grooming is there. These are very, very important. Then it comes to paralinguistic. Rate of speech, clarity, clarity of thoughts need to be clear. मुझे क्या बोलना है, there should not be any fumble into it. Do not paraphrase your statement again and again and again, right? Every possible time you should have a new example to share the old thought, right? बार बार paraphrase करेंगे तो हम boring sound कर जाते हैं. तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर अलॉन्ग विद दैट हमारा जो पीपीटी जो बनाए, अपना पीपीटी के बारे में आपने देखा होगा, मैंने खाली इसमें वर्ड्स ही लिखे हुए उसके अंदर. मैंने पीपीटी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं डाले बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टेटमेंट का होता क्या है, जब हमारे लिसनर्स स्टेटमेंट पढ़ने में बिजी हो जाते हैं तो उनकी लिसनिंग खराब हो जाती है, और लिसनिंग खराब होती है तो क्या होता है, हमारी इम्पैक्ट पढ़ना खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली. तो लिसनर्स जो है हमारे वो चले जाते हैं. तो हम जब प्रेजेंटेशन को बनाए तो इंपॉर्टेंट बनाए, स्टोरीज को ऐड करें, कोई स्टोरीज को लेकर के आए, बिकॉज स्टोरी सुनना हर किसी को पसंद है, किसी भी एज ग्रुप का इंसान सुना हो. स्टोरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल लव टू लिसन टू स्टोरीज. गाइस ये वो स्मॉल ट्रिक्स हैं, तो आपको बेहतर लगेगी. और एक बात और कहूंगा, मैं अपनी लाइफ में अपने प्रेजेंटेशन में हमेशा उन चीजों को इस्तेमाल करता हूँ जो कि टेंजिबल हैं, जिनको लोग अपने आसपास के दायरे में महसूस कर सकते हैं, राइट? अगर आप किसी बड़े इंसान का एग्जाम्पल नहीं देंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे जो कि लोगों के लिए खाली मिसाल बन के बैठा हुआ हो, एंड नोबडी नोज द रियलिटी, लेना मुश्किल होगा. अगर हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल ज्यादा होंगे जिनको लोग महसूस कर सके अपने आसपास में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया था, आपके आई कैन और आपके आई कांट, इस सवाल के जवाब मैं आपको अगर दूं, अगर आपने लिस्ट बनाई है आपके आई कैन की, वो जो कुछ भी आप कर सकते हैं, और आई कांट जो आप नहीं कर सकते, आई कैन को भूल जाते हैं, आपके आई कांट पे आते हैं, उसकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी होगी. लेकिन प्रॉब्लम इज व्हाट कि आपके आई कांट की लिस्ट में 90% आई कांट ऐसे हैं जो कि नीदर ट्राइड एंड नॉट टेस्टेड है. यू हैवंट ट्राइड ऑन इट, यू थॉट इट, लेट मी राइट अ बुक, लेट मी राइट अ बुक, मैं एक बुक लिखता हूँ, नहीं यार मेरी बस की बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा. लेट मी डू दिस, अरे नहीं यार पॉसिबल नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा. व्हाई डोंट आई ट्राई दिस, अरे नहीं यार ये भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मैं बस की बात नहीं है. तो आपके जितने भी आई कांट है ना, उनमें 90% तो नीदर ट्राइड नॉट टेस्टेड है. तो हाउ वुड यू गेन कॉन्फिडेंस? आपको तो हर बात में ये लगता है ना कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता. ट्रांसफॉर्म योर माइंड बिफोर यू गिव अ स्टेटमेंट और कंक्लूजिंग स्टेटमेंट दैट यू कांट डू दिस. पहले ट्राई कर लेते हैं, देख लेते कितना होगा. जीरो से बेटर वन. अगर जीरो से आपने इनिशिएट किया, वन पे आ गए ना, तो वन के बाद 2, 3, 4, 5, 10 ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा. 10 अटेम्प्ट्स के अंदर अंदर आप 50% के मार्क्स स्कोर करना स्टार्ट कर देंगे फॉर श्योर. यस भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. From Mr. Pankaj Kumar, how can we improve our presentation skills? I just gave the answer to that question only. You know that regarding your non-verbal communication, your gestures and postures, and the content is very very important. This is what I answered just now. So there's another question from Syed Ali Raza. Is it Mhm. necessary to join any institute to improve our communication skills? Well, I personally don't advise you, because what happens, for example, if you have a group of 5 or 6 members wherein you can speak English communication, English freely and comfortably, it means that now you have a comfort zone with those 5 people. When you go to a particular coaching class, what will happen that you will be able to interact with those 20 students, 20 odd number of people, right? My advice is what that, dear, I am from Hindi medium, right? मेरी हिंदी मीडियम की है, मेरा जो 12th है मेरा वो यूपी बोर्ड से मैंने किया है. मेरे सरकारी स्कूल का नाम था स्टेट वासुदेव सहाय इंटर कॉलेज का मैं पढ़ा हुआ हूँ. मेरी जो स्कूलिंग हिंदी मीडियम की है. मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से है. बहुत चैलेंजेस थे, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, स्टेज पे मजाक बनता था मेरा. आई हैव एक्सपीरियंस लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट, राइट? लेकिन मैंने कहीं से एक बात सुनी थी, मैंने बोला गया कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो क्या है? बेशर्मी. अगर आप बेशरम हो ना, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे. लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमको जहां पर बेशरम होना चाहिए ना, इन शॉर्ट हम वहां बेशरम नहीं होते, और जहां हमको नहीं होना चाहिए वहां बेशरम हो जाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, गालियां बकना, एब्सर्ड लैंग्वेज, ये बेशर्मी की बात है कि लोगों के सामने पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर माँ बहन की गाली बक रहे हैं. दैट वी हैव टू बी ashamed of these things. हमको वहां पे शर्म आना चाहिए, बट वहां शर्म नहीं आती हमको. इंग्लिश बोलने की बारी आएगी तो क्या होगा? हमें शर्म आ जाएगी. तो ऐसी 100 चीजें हैं जो कि हम देखते होंगे आसपास होती हैं, जहाँ पे हमको शर्म की जरूरत है. हमें वहां पे शर्म आना चाहिए, वहां पर हम बेशर्म बने होते हैं. और जहां पर हमको बेशर्मी हमारे लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वहां पे हमको शर्म आती है. तो पहली चीज क्या है? आप बेशर्म बन जाए. दूसरी बात क्या है? आपके पास में डिवाइस है मोबाइल फोन की, राइट? उसका इस्तेमाल करिए, वो आपको बहुत फायदा करेगी आपके इंग्लिश में काम करने के लिए.
कस्टमर केयर में कॉल लगाएं, पहले अपने टेलीकॉम पे कॉल लगाएं, उनसे रोज के आप असूल बना लीजिए अपना, एक आप आपके फोन से, अपने फ्रेंड के फोन से, मदर के फोन से, फादर के फोन से कॉल लगाएं और सवाल करें, हाउ कैन आई एक्टिवेट माई कॉलर ट्यून, हाउ कैन आई डीएक्टिवेट माई एसएमएस सर्विसेज, आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन। उसके बाद में क्या करिए, इंडिगो एयरलाइन से वहां कॉल लगा दी, आई वांट टू बुक अ फ्लाइट फॉर गोवा, व्हाट वुड बी द फेयर चार्जेस। तो ये क्या होगा, जब आप अलग अलग सेगमेंट में कॉल लगाएंगे, टोल फ्री नंबर्स हैं, 1-800 नंबर्स हैं, एचपी के हैं, लेनोवो के हैं, इंक्वायर अबाउट द प्रोडक्ट। तो व्हेन यू एक्चुअली इंक्वायर अबाउट द प्रोडक्ट, टॉक अबाउट, यू विल फाइंड दैट, ओ माय गुडनेस, मेरे पास तो एक्सप्रेशन नहीं है, वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे पास, हाउ कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ कैन आई आस्क दैट क्वेश्चन, देन व्हाट विल हैपन, automatically you will look for new words, new expressions, right? And that is how you are going to gain and gain more and more word and more statement. And जब आप knowledge gain करोगे, तो जब पब्लिक मीटिंग से बैठोगे, पब्लिक गैदरिंग से बैठोगे आप, तो आपके पास बोलने के लिए कंटेंट होगा। जब बोलने के लिए कंटेंट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश में ग्रामर कितनी सही है या गलत, वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लोग आपका कंटेंट सुनेंगे बेटा बाद में फिर आपका। तो पहली चीज, थोड़ा सा बेशरम बन जाइए, और दूसरी चीज, पब्लिक स्पीकिंग में आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल, रोज शाम को 15 मिनट अपने नजदीक के बस स्टॉप पे लगा दीजिए, है ना, 15 मिनट आपके नजदीक के बस स्टॉप के ऊपर, और बस स्टॉप पे करना कुछ भी नहीं है, सामने वाले को इंग्लिश बोलना आती है या नहीं इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, मुझे 15 मिनट पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। मैं क्या गया, शॉपिंग मॉल में चला गया, बस स्टॉप पे चला गया, सवाल कर रहा हूँ, सर एक्सक्यूज मी, could you please tell me how can I reach Vijayanagar, could you please tell me how can I reach Hazratganj, is there any medical store nearby, I am new here। तो आपको करना कुछ नहीं है, दैट इज द ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू डू। आपको मेडिकल भी मालूम है, आपको साइबर कैफे भी मालूम है, आपको सब पता है कैसे कहाँ जा सकते हैं, यू हैव अवेयर अबाउट एवरीथिंग, राइट? बट व्हाट यू हैव टू डू, प्रैक्टिस, दैट्स इट, खत्म कहानी बेटा, चैप्टर क्लोज। यस भाई, कैन आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? There's another question from Mr. Nishant Kumar Verma. So यस, please tell me about emotional intelligence. ओके, निशांत, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मेरे एक स्टूडेंट है, नाम नहीं बताऊंगा आपको उनका, उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी। तो मैंने उसको पूछा, मैंने बोला, एक बार बैठी हुई थी, बहुत सैड थी, शी वाज अ गर्ल। तो पूछा, मैंने बोला बेटा क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? बोला कि सर मेरी हाइट बहुत छोटी है। मैं बोला कब मालूम पड़ा आपको इस बात का कि आपकी हाइट छोटी है? बोला कि सर 2-3 साल से मैं ट्राई भी कर रही हूँ, एफर्ट्स भी कर रही हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, हाइट नहीं हो पा रही। मैंने कहा आपको मतलब आपको आपकी हाइट पे रोते हुए 2-3 साल हो गए? बोले यस सर। तो मैंने कहा बेटा बात समझ में आई आपको कि आपके रोने से आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपकी हाइट से आपकी कामयाबी भी रुकने वाली नहीं है किसी भी हाल में, राइट? आपकी हाइट हुआ या आपकी फिजिक हुई, वो किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। भारती सिंह फैटी है, बहुत मोटी है, उसने अपने मोटापे को एक्सेप्ट कर लिया, और वो आज की तारीख में मैक्सिमम जो किस पे मारती है, अपने मोटापे पे मारती है। मैक्सिमम जो भारती सिंह के उसके मोटापे के ऊपर होते हैं, क्यों? उसने अपने मोटापे को एक्सेप्ट कर लिया, उसको मान लिया कि मैं ऐसी ही हूँ, राइट? राजपाल यादव, राइट? जॉनी लीवर, ये स्मार्ट लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया है, अपनी एक स्किल को इतना शार्प कर दिया कि उनकी जो फिजिकल चीजें हैं वो लोगों की हाइट में छुप गई, वो अपने आप ही गायब हो चुकी है वहां से। वो पीपल कांट थिंक दैट कि जॉनी लीवर जो है वो इतना ब्लैक कॉम्प्लेक्शन का है, या राजपाल यादव इतना शॉर्ट हाइटेड है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बेसिक्स हैं वो कहते हैं स्वीकारना, अपने आप को स्वीकारना। मैं दुबला पतला हूं, मैं हूं, मेरा रंग काला है तो है, मेरी हाइट छोटी है तो है, अब इस पे रोना नहीं है, यहाँ से बाहर निकल के आना है तो ग्रोथ है। और यहाँ अटक के रह गए, अरे यार मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोचिंग में कैसे जाऊं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं। मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को, अपने ट्रेनिंग्स को एडवाइस करता हूं कि अगर तुमको लगता है कि वैल्यू एडिशन सर्टिफिकेट के बाद में ही तुम्हारे पास नॉलेज आएगी, तो बेवकूफी यही है। आप ऑनलाइन जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहां पे फ्री में वीडियो का अंबाला लगा पड़ा है, देखिए वीडियो। आप जब इंटरव्यू में जाके बैठेंगे कैंपस के अंदर, जब आप एचआर को नॉलेज शेयर करेंगे, एचआर इज लीस्ट बॉदर वेदर यू हैव अ सर्टिफिकेट और नॉट, राइट? नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें हैं, हम हमारी खुद की सेल्फ इम्पोज की हुई जो ऑब्स्टिकल्स है ना बेटा, वो निकाल दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, चीजों को स्वीकार कर लीजिए, बट दैट इज द ओनली थिंग आई वुड से दैट हियर। यस भाई। There's another question from Mr. Abhishek Gautam. या We, we have chosen our goal, and due to some condition, if we are distracted, so is there a solution to such problem? वेरी करेक्ट है बेटा कि देखो होता क्या है, वी हैव चोजन अ गोल, हमने हमारा गोल चूज किया है, राइट? अब हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है, या तो उस गोल को लेकर के हमारे दिमाग में डाउट्स आ गए, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, पॉसिबल रहेगा या नहीं रहेगा, फीजिबल रहेगा नहीं रहेगा, मेरे लिए बेहतर रहेगा नहीं रहेगा, वी हैव गॉट बंडल्स ऑफ क्वेश्चन ऑल टुगेदर।
इट है, इसीलिए कहा जाता है कि जब हमारे पास में ऑप्शन ए पे काम कर रहे हो ना, वन शुड नॉट हैव ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या करता है, वो हमको डिस्ट्रैक्ट करता है। ऑप्शन बी क्या करता है, वो डिस्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि अभिषेक का जो गोल था कि अभिषेक को तैयारी करनी है, काय की, अभिषेक को आईएएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अभिषेक को लग रहा है कि यार पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरे बस का होगा या नहीं होगा, डाउट दिमाग में आ रहे हैं, लोगों के थॉट्स भी आ रहे हैं, अरे यार आईएएस बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, हलवा थोड़ी है, 16-16 घंटे पढ़ा। तो वी हैव अ मल्टीपल थिंग ऑल टुगेदर। तो यार अभिषेक को करना क्या चाहिए? अभिषेक नीड टू डू ओनली वन थिंग, दैट अभिषेक शुड बिलीव इन हिमसेल्फ कि यार अगर मैं मेरा 100% लूंगा तो मैंने अब तक क्या अचीव नहीं किया। मैंने 10th भी पास किया, मैंने 12th भी पास किया, मैंने ग्रेजुएशन भी पास किया, मैंने अपनी लाइफ में ये भी अचीव किया, मैंने वो भी अचीव किया। जब आपके पास आपकी अपनी खुद की अचीवमेंट की लिस्ट है जो बताती है आपके पास में कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटीज भी है, पोटेंशियल भी है, जील भी है, पैशन भी है, सब कुछ तो है, डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ये हो गया कि शायद मेरे पास में ऑप्शन बी आ गया है जो कि ए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड पे जा रहा है, और मुझको ए से मेरा दिल खट्टा हो रहा है, मैं ए पे काम करना शायद नहीं चाह रहा हूँ। तो बेटा अपने आप को दोबारा फिर से वो वाइब्स दीजिए कि आपके लिए आपका ऑप्शन ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ऑप्शन बी। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपनी प्रायोरिटीज पे डटे रहें, जमे रहें, जब तक कि उसको हम एग्जीक्यूट ना कर दें। जी भाई। There's another question from Mr. Babunand Kumar. Sir, जी। how to control our mind and how to keep controlling in positive way? And one thing more, sir, how to improve our concentration power? ओके, कंसंट्रेशन को लेकर तो मैंने कल भी सवाल जवाब दिया था बेटा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट हम जब बात करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी, तो वी आर सराउंडेड बाय बोथ द एनर्जीज। वी हैव गॉट पॉजिटिव एनर्जी एज वेल, वी हैव गॉट नेगेटिव एनर्जी एज वेल, बोथ आर देयर अराउंड अस। अब द प्रॉब्लम इज व्हाट कि बोलते हैं ना कि हम जो कहते हैं डिसीजन की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, हम चॉइसेस की बात कर रहे होते हैं। तो हमारे पास में दो चीजें अवेलेबल हैं, अब दो में से चुनना हमको ही है। तो वी आर द सिलेक्टर। तो चुनाव जो है वो हमारे हाथ में ही है, वो किसी और के पास में नहीं है। सिलेक्शन के प्रोसेस मेरे पास नहीं है। आप क्या चुनते हो वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक जोक में एक एसएमएस मैंने पढ़ा था कहीं के ऊपर, वो था कि वी हैव टू बुल्स इन अवर माइंड, वी हैव टू बुल्स इन अवर माइंड एंड दे आर फाइटिंग टुगेदर ऑल द टाइम, वन इज गुड एंड वन इज बैड, हु विल विन? लोग कहते हैं अच्छा जीतेगा या बुरा जीतेगा, बट द आंसर इज whom we feed the more। जिसको हम ज्यादा खाना खिलाएंगे, जिसको ज्यादा खाना खिलाएंगे उसमें ज्यादा ताकत आएगी, वो जीतेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे को खाना खिलाते हैं या बुरे को खाना खिलाते हैं, वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। तो अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट आपके पास जो चॉइसेस आ रही है पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव थॉट्स आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देंगे, है ना। अगर आप किसी भी बारे में नेगेटिव थॉट पे जाते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये तो कंफर्म बात है, ये तो श्योर शॉट हो गई है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, यू आर डिटर्मिनेड टू गो फॉरवर्ड, यू आर डिटर्मिनेड टू मूव फॉरवर्ड, तो ऑटोमेटिकली आपको अगर 100% में से अगर 99% आपको नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, 1% दिखाई पड़ रहा है पॉजिटिव, तो 1% पॉजिटिव पे जाइए, ना कि 99% नेगेटिव पे जाइए। आपको हर बुराई में अच्छाई मिल जाएगी। बोलते हैं एक इंसान है, मैं हूं, राइट, आई एम नॉट अ परफेक्ट इंडिविजुअल, राइट। मेरी माँ को मुझसे कुछ शिकायत होंगी, मेरी वाइफ को कुछ शिकायत होंगी, मेरी डॉटर को कुछ शिकायत होंगी, आई एम नॉट परफेक्ट। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, जब तक लोग मुझ में कमियां देखते रहेंगे ना, मैं उनके लिए बुरा बना रहूंगा, मैं बुरा बना रहूंगा उनके लिए, हमेशा बुराई करेंगे, ये सलमान ऐसा, सलमान वैसा। लेकिन जब वो मानेंगे सलमान अच्छाई और बुराई का पुतला है, एक काम करते हैं, थोड़ा बुराइयों को अवॉइड करते हैं, अच्छाइयों में देखते हैं कुछ है कि नहीं उसके अंदर, तो मालूम पड़ेगा नहीं यार, दे आर 4 और 5 थिंग जो कि बहुत अच्छी भी हैं। तो ये अच्छाई से बुराई और नेगेटिव और पॉजिटिव को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के बाद में हमारा ये फोकस होगा है अटेंशन के साथ में कि मेरे को पॉजिटिव साइड पे फोकस करना है, नेगेटिव पे जाना ही नहीं है। मैं इंग्लिश बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, ये देखिए हो गया नेगेटिव साइड हो गया मेरा, मैंने इंग्लिश बोली, मुझे बोलना नहीं आती, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। इसका पॉजिटिव साइड क्या है, या मैं इंग्लिश बोलूंगा लोग हंसेंगे, वो अलग बात है। मेरे इंग्लिश बोलने से मेरे अंदर सुधार आएगा, मुझ में इंप्रूवमेंट आएगा, कल को मेरी इंग्लिश जो है वही मेरे लिए एक रोजी का जरिया बन जाएगी। देयर आर एन नंबर ऑफ जॉब जहां के ऊपर इंग्लिश कम्युनिकेशन मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, तो मेरे लिए फायदे की बात है। तो दैट इज हाउ यू कैन एलिमिनेट फ्रॉम नेगेटिव एंड पॉजिटिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी भाई। There's another question from Mr. Wasiuddin Khan. How can we improve our body language? How can we improve our body language? See, sometimes what happens that we are very reactive, right? मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो दो चीजें होती है लाइफ में, एक होता है रिएक्शन, दूसरा होता है रिस्पॉन्स। ये दोनों वर्ड बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को आप। ये एक वर्ड होता है रिएक्शन, दूसरा होता है रिस्पॉन्स। हम या तो सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं
या तो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो दो पहले वो हमारे नॉन वर्बल से बाहर आता है, हमारे बॉडी लैंग्वेज से बाहर आता है, फिर वर्बल से बाहर निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे बैठे हुए हैं, किसी महफिल में बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ में, और कोई ऐसा बंदा आता है जिसको आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, तो जैसे ही वो दिखाई पड़ेगा आता हुआ, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी ना, एक वेलकम वार्म फीलिंग आएगी, अरे यार तू आ गया, कम ऑन, अब मजा आएगा, वेरी नाइस, वेरी गुड। हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं, आ गया इसमें। और वहीं पे एक बंदा है जिसको आप बहुत इरिटेटिंग मानते हैं, बहुत अनोइंग मानते हैं, जैसे ही सामने आया, अरे अब अंदर ही बातें हो रही, अरे यार ये आ गया, पकाएगा यार ये, अब यार क्या करें। तो ये क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में लोगों को लेके थॉट बने हुए हैं, वो थॉट बने हुए हैं, उसको लेकर के हमारे पास में रिएक्शंस आ रहे हैं। तो पहला काम तो क्या होगा कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, यू नीड टू स्टॉप योर रिएक्शन, क्योंकि आपके जो रिएक्शंस है नॉन वर्बल, वो सामने वालों को मैसेज दे रहे हैं कि वेदर ही इज वेलकम्ड और ही इज नॉट वेलकम। बात ध्यान दीजिएगा। तो जब आप रिएक्शन को कंट्रोल करके रिस्पॉन्स पे जाएंगे, रिस्पॉन्स जाएंगे, तो यार मेरे ये रिएक्शन सामने वालों को बैड फील कराएंगे, बुरा महसूस कराएंगे, तो आई शुड नॉट रिएक्ट इन दैट वे। अब कोई भी आए, वो अच्छा वाला भी आए, बुरा वाला भी आए ना, हाय हेलो हाउ आर यू डूइंग गुड, वेरी नाइस, वेलकम करिए चीजों को। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रोवाइज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड दैट टू व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग टू रिएक्ट, बी रिस्पॉन्सिव। राइट, पब्लिक प्लेस पे खड़े होते हैं ना, ये नहीं कि टेक लगा के दीवार से खड़े हो गए, राइट, तो यू नीड टू मेंटेन योर जेस्चर एंड पोस्चर। ये जो पोर्शन होगा आपका, ये फोकस के साथ में होगा। आप अगर किसी शॉपिंग मॉल में खड़े हुए हैं, आपका जेस्चर पोस्चर क्या है? आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपका जेस्चर पोस्चर क्या है? आप फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपका जेस्चर पोस्चर क्या है? यू नीड टू पे अटेंशन। और ये जो पोर्शन है हमारा, दैट पोर्शन, दैट इज हाईली कम्युनिकेटिव। हमारे आई बॉल, राइट, कहते हैं कहा जाता है कि जब आई बॉल्स हमारे ऊपर जाते हैं, तो हम कुछ कहानी बना के सुना रहे हैं, राइट। आज जब आई बॉल नीचे जाते हैं तो झूठ बोल रहे होते हैं। जब आई बॉल लेफ्ट और राइट जाते हैं तो हमको नॉलेज थोड़ी बहुत है, बट वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट मोर डेटा ऑन इट, राइट। और जब हम आंखों में आंखें देख के बात कर रहे होते हैं तो वी आर कॉन्फिडेंट। तो ये चीजें कॉमन है, ये सबको मालूम है। तो हमें करना क्या है, हमको हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस होकर काम करना है। हमको रिएक्टिव नहीं बनना, हमको रिस्पॉन्सिव बनना है। अगर आप रिस्पॉन्सिव बन के काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेस है आपके डेवलपमेंट का, ये बहुत तेजी में आगे बढ़ेगा, and you will be able to control your non-verbal communication. Be responsive and not be reactive. जी भाई। Thank you, Salman Zia sir. So there are a few more questions, but due to the time constraint, I think we'll have to end the session. Thank you so much for your enlightenment and the session which we have conducted. There are quite many takeaways for the students, and I believe they will definitely implement the strategies and the learnings which we have imparted today for them, and I they wish will also. it will help them in transforming their mindset. Thank you very much, and we look forward to conducting similar sessions in future. I would now request the faculty member of the college, Bansal Institute of Technology, Mr. Abdul Jabbar, to please speak a few words. Thank you, sir. On behalf of Bansal Institute of Engineering Technology, I'm very thankful for all MP group, especially Mr. Salman Zia sir and Mr. Ehsan Chishti sir and Sufia Qureshi ma'am for organizing such a wonderful and knowledgeable training session for our students, final year students. And I am sure that our students will take this opportunity as a very seriously and apply in their future life. And बेसिकली आई एम वेरी थैंकफुल टू सर, जो आपने नॉलेज बताया वो हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि हम अपनी सोशल लाइफ में और आगे के फ्यूचर में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनको हम सोचते हैं कि हमारे लिए बंद है, लेकिन सही मायने में उसमें कोई लॉक नहीं लगा होता है और उसकी चाबी हमारे पास ही होती है, लेकिन हम उसमें ट्राई नहीं करते, है ना। तो ये चीज़ों में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए और कभी भी जो है अपनी होप को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम बहुत कुछ आगे जा सकते हैं। ऊपर वाले ने हमें बहुत आगे जाने के लिए बनाया है, लेकिन हम अपनी कमजोरी की वजह से पीछे रह जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thanks a lot. Now we would be ending the session. I would now also like to tell the participants that to conduct the similar or participate in similar sessions, you can visit our website www.ampindia.org, and we keep updating about our future programs similar to employability training programs or job fairs, job drives on our website.
So kindly keep visiting the website. I would now end the session with a small dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Thank you everyone. Have a good day. Thank you. Same to you. Thank you, sir.